Hello and welcome to the IDFC First Bank Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 Bihar take on Madhya Pradesh at the iconic Eden Gardens here in Kolkata. Head. Heads is the call and tails it is. Sakibul, you've won the toss. क्या decision है आपकी और क्यों? पहले bowling करेंगे यहाँ. Change of fortunes for Bihar with the toss. They will be bowling first. Madhya Pradesh. Well, one change for them. Kumar Kartikeya comes in to the fold as Arshad Khan makes way on the other side. Bihar making two changes. Nawaz Khan comes in. That should boost their pace attack, and so does a batter in the form of Piyush Kumar Singh. So two changes there. अंकुश सिंह की तरफ जाए ना, 2 इनिंग में 13 रन बनाए हैं इन्होंने. His opening partner Abhishek Pathak, 74 runs. But Nawaz Khan into the 11 and straight away will start proceedings as well for Bihar. A bit of miscommunication between the batters, but first runs on the board in the form of leg byes. इस बार टाइम हुआ है और पहला चौका आज के मैच का. Throws his hands at that one. It's going to run away. Back-to-back boundaries to end the first over. 10 without loss. Nicely driven. Gets to the boundary in a flash. This time into the left-hander. Quick single take and direct hit as well. They are interested. Tony Amity at square leg now. Sends it upstairs. वो बिल्कुल आसान रहता नहीं है ये फॉलो थ्रू में. और इस गेंदबाज ने वो बनाया वो मौका बिहार के लिए. बिल्कुल क्या कमाल का थ्रो और उसके बाद कलाबाजी देखिए. वो बल्लेबाज फ्रेम में भी नहीं थे इसीलिए वो चलते दिखे हैं. Abhishek Pathak back to the hut for 8, 14 for 1. Harsh Gali comes to the crease. Worked away. Good balance. Strong wrists. इस बार मिड ऑन के ऊपर से क्योंकि जानते थे फील्डर ऊपर है, आसानी के साथ वो बाउंड्री प्राप्त की है. Cut away majestically. Amazing shot to start the over. This time connects. Just evading that jumping fielder at cover. Another boundary to Ankush's name. Pulled away in front of square. Goes all the way. First maximum of the day here at the Eden Gardens. This time in the air. A dolly for mid-off. Mohammad Izhar gets another one, this time with his bowling. और सफलता दिलाई है यहाँ पे इज़हार ने. अच्छा कमबैक किया. पहली गेंद पे छक्का था, उसके बाद ये वापसी. अंकुश सिंह ने बनाए हैं 25 रन. 40 पे 2 मध्य प्रदेश. The skipper walks in at number 4, Harpreet Singh. Edged and taken. Chasing that wide one. And the keeper, Loharuka, makes no mistake. Low to his left. Putting in the dive. 2 wickets in the over. शून्य पे जाएंगे हरप्रीत सिंह वापस. 41 पर 3 मध्य प्रदेश. And in comes Aniket Verma. They're pushing the second run. Miscommunication and easy run out effected. Bihar are on fire. Madhya Pradesh on their haunches. And they lose their 4th wicket because of erroneous running. और यहाँ गलती कर बैठे हैं. ये मौका आप दे नहीं सकते फील्डर को आसानी के साथ. अनिकेत वर्मा को चलता किया है. 43 पे 4 हो चुके हैं एमपी. A man who needs no introduction at the Eden Gardens, Venkatesh Iyer in the middle. Lofted, glorious, lofted cover drive. And that's going to go all the way for a maximum. Put that up on the wall, hey. Gali shifts this again, targets the same area. The result, relatively fewer runs, but that's going to be a boundary. Nicely played into the leg side, beats the fielder. That's been smoked over the boundary ropes. Gauli gets his second sixer of the day. And it sends it up and over the side screen. Just picks it up straight. Beautifully played. Gauli
finds the gap, brings up a well-scripted 50, a knock scripted with class, composure and oodles of quality. Gets a well-deserved applause from the Madhya Pradesh dugout. He's gone for a big one. A chance at long on, running in, sets himself up nicely. कमाल की गेंदबाजी करते हैं, बाहर करने की कोशिश करते हैं, सीधा रहता है गेंद, उधर से मारना मुश्किल होता है। और हर्ष जो सेट हो चुके थे, 50 बनाया था इससे पहले और आसान सा कैच हर्ष ने बनाया है। 50, 109 पर 5 मध्य प्रदेश। कमाल का चौका आया यहां पे राहुल के लिए। 115 पे 5 है 16 ओवर के बाद मध्य प्रदेश। पर इस बार कमाल का शॉट, राहुल ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए यहां पे कि वो जानते हैं कि आखिरी के ओवर में बल्लेबाजी आई है, ऐसे ही खेलेंगे। ये बेहतर है पर उनके पाले में, और बड़े आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया वेंकटेश अय्यर ने। इस बार स्लो गेंद किया, फील्डर मौजूद है पीछे, बिल्कुल आसान सा कैच। वो तीसरा विकेट इनके नाम। राहुल बाथम को आउट किया है इन्होंने। Rahul Botham goes for 12, 133 for 6. In at number 8, Shivang Kumar. एक और अच्छा गेंद पर उतना ही अच्छा एग्जीक्यूट किया यहां पे शिवांग ने। This one he times well, as if on cue. Incredible hit. Another one, this time fuller from the bowler, but same result off the bat of Iyer. Back-to-back sixes to end the penultimate over. 18 runs coming off at 159 for 6. एक और अच्छा शॉट कवर के ऊपर से इस बार, और 50 रन भी पूरे किए वेंकटेश अय्यर ने। An important half century here for Venkatesh Iyer. Moves in, looks to lap, but goes straight to short fine. The fielder wasn't ready. He was in position, and Azar gets another one. Wicket number 4 for the young man. शिवांग ने बनाए हैं 12 रन, 167 पर 7 मध्य प्रदेश। 2 balls left as Tripuresh Singh makes his way out. Back of the hand, slower delivery again. Deep mid wicket. We'll watch it sail over his head into the stands. इस बार स्कूप किया और वो कैच छूटा है वहां पे। वो 5 विकेट लेने का चांस था इजहार के पास, पर रनआउट का मौका जरूर बना है। A chance of a 5-wicket haul wasn't to be here today for Mohammad Azhar. He did all the hard work. A fairly easy chance at short fine goes down. But Azhar had the presence of mind. There's the catch going down. But Azhar had the presence of mind to get to this stump. What an innings it's been from Venkatesh Iyer. Staying unbeaten on 55. Taking Madhya Pradesh past 170. 174 is what they finished on for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. Bihar need 175 to get their first win. शकीबुल गनी कप्तान है इस टीम के। 800 से ऊपर रन, 31 इनिंग। दूसरी तरफ स्टार बल्लेबाज सूर्यवंशी। Venkatesh Iyer has been tasked with opening bowling duties. इस बार ऊपर थी गेंद और बड़े आसानी के साथ मिड ऑफ के ऊपर से खेला है और चौके के साथ खाता खोला है अपना। इस बार शॉट खेलने की जरूरत, थर्ड मैन का खिलाड़ी ऊपर था और एक आसान सी बाउंड्री मिली है। बैक टू बैक बाउंड्री गनी के लिए। Hit officially once again evades the wicket-keeper. Make that a hat-trick of 4s. All of them coming off the bat of Bihar captain Saqib Ul Ghani. Shuffles across, lofts this. Fielders coming underneath it and taken. 3 boundaries followed by a wicket and a catch well taken by the opposition captain Harpreet Singh Bhatia. शकीबुल गनी ने बनाया 12 रन, 12 पर 1 बिहार। As Ayush Loharuka, the wicket-keeper batter for Bihar, comes out to the middle. अब त्रिपुरेश आए हैं और अब कमाल की टाइमिंग देखने को मिली है वहां पे आयुष द्वारा। इस बार छोटा गेंद था और फील्डर मौजूद था, पर दर्शक बने रहेंगे और इस बार बाउंड्री प्राप्त की है पहली सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से। Suryavanshi goes leg side,
sends this packing into the stands. और बिल्कुल यहां पे मौका था और आसान सा कैच हरप्रीत के लिए। कुछ जगह बनाने जाते थे वैभव सूर्यवंशी पर विकेट चटकाई है यहां पे शुक्ला ने। पहली सफलता दिलाई है अपनी टीम को। Vaibhav Suryavanshi walks back to the hut for a 9-ball 13. Bipin Saurabh, new batter in. Gives it the Humpty, does Loharuka, clears the infield, and the ball races away all the way to the ropes. Loharuka sends this straight into the hands of Harpreet Singh Bhatia, who's claiming his third catch of the innings. And what a fine take this was. आयुष ने बनाए हैं 12, 38 पर 3 बिहार। New batter in is Piyush Singh. Nicely slog swept. Boundary for Bipin Saurabh. Beautifully played. This is live action now, not a replay. Beautifully played and placed. Bipin Saurabh hoiks this into the leg side and deposits into the stands. A 4 followed by a 6. Oh, picks that up leg side, nice and fine as well. One bounce into the fence. Beautifully played. Into the pads of Saurabh, who sends this stonking into the mid-wicket region. इस बार चांस बना जरूर है। ऊपर गई है ये गेंद और आसान सा कैच वहां पे हरप्रीत सिंह भाटिया के लिए, जो चौथा कैच लिया है इस इनिंग का इन्होंने। He's been a busy man in the field as the skipper Harpreet. As Bipin Saurabh walks back for 32, 87 for 4 as Akash comes to the crease. इस बार फिर ऊपर खेला है, काफी ऊपर गया ये गेंद, फिल्टर नीचे है और बिल्कुल आसान सा कैच। एक ही ओवर में दूसरा झटका दिया यहाँ पे, पीयूष को चलता किया है इस बार। दोनों सेट बल्लेबाज। Tripuresh Singh with that catch, well judged. Back Piyush Singh, after all the hard work he did, 17 is what he got, 88 for 5. Suraj Kashyap is the new man in. Looking to switch it up. But loses his stumps. Right on target is Shivam Kumar. Picks up his third. He's been right on target and has had the batters dancing to his tunes. सूर्य कश्यप ने बनाए हैं 3, 96 पर 6 बिहार। Khalid Alam comes in to bat. This has been swatted aerially into the leg side, and against the run of play comes a humongous 6 off the bat of Akash. Nicely played into the leg side. Fielders settling underneath that one. Straightforward regulation catch taken. Madhya Pradesh have been on the money with their catching today. आकाश राज ने बनाए हैं 14, 106 पे 7 बिहार। As in comes Bhanu Kumar. Chance of a run out there goes a begging, and the umpire on field has decided to send it upstairs. अच्छा थ्रो, थोड़ा दूर रह गए थे, देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल टच एंड गो वाला मामला है यहाँ पे। खाली जाएंगे वापस 3 रन पे। 108 पे 8 बिहार। Mohammad Izar, the new batter in. Bhanu sends this skywards. Long on, settling underneath it and takes it. Easy catch. Another wicket tumbles and Tripuresh picks up his second wicket of the match. Very well deserved. और नेल्सन था स्कोर वहां पे और वो सफलता दिलाई है यहाँ पे। भानु ने बनाए हैं यहाँ पे 2 रन और 111 पे 9 है बिहार। Nawaz Khan. इस बार वो बाहरी किनारा लगा जरूर है और बिल्कुल वो विकेट इधर जाएंगे वापस और ऑल आउट कर दिया यहाँ बिहार को 112 पे, जिसके लिए लाया गया था राहुल बाथम को। And marking a successful defense of 174. Madhya Pradesh winning by a whopping 62 runs. A far cry from their decisive big margin loss to Hyderabad just a couple of days ago.